कर दे कर दे। Very good afternoon to all of you and welcome to this first episode of 1000 important question for law entrance examination students. 1000 important GK questions हम यहाँ पर target करने वाले हैं. This is going to be the first episode for it. How we are going to go for this 1000 questions? See, every week we take some important question for the particular week. उस week के हम लोग 35 to 50 questions we take every week. एंड एंड ऑफ द अगर आप सेशन देखें एग्जाम के ताल्लुक में हम आगे बात करें तो वी आर गोइंग टू टारगेट 1000 दोज क्वेश्चंस हु आर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर ओलेट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं जो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है जहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के 1000 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस वी आर टारगेटिंग. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एपिसोड, है ना. ये हमारा पहला एपिसोड है. Going with the trend only, मतलब जो हम लोग अभी तक 35 क्वेश्चन डिस्कस करते आए हैं, फ्रॉम दिस एपिसोड वी आर डिस्कसिंग 35 क्वेश्चंस ओनली. नेक्स्ट वीक से वी आर गोइंग टू टेक 50 क्वेश्चंस एवरी वीक. दैट विल मेक अस टू हैव अराउंड 200 क्वेश्चंस अ मंथ, जो हमारे प्रत्येक महीने के करीब करीब 200 क्वेश्चन होंगे हर महीने के. And that way we'll have the target of 1000 questions. Those questions are which are going to be most important for your audit examination, for other law entrance test, right? To start with today's discussion, before I start, I must tell you the book which are going to get. Reward is always going to be there. So this book is going to be reward for you. First thing first, am I clearly audible and visible to everyone? But am I clearly audible to everyone? चलिए, द रिवॉर्ड फॉर द क्विज, टुडेज क्विज जो हम 35 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे फॉर लास्ट वीक फ्रॉम 26 से 4th ऑफ मार्च तक की जब हम बात करते हैं तो हम 35 क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं उस 35 क्वेश्चंस के विनर को रिवॉर्ड जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस बुक बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम, है ना. ये बुक जो आप देख रहे हैं दिस बुक इज गोइंग टू बी गिवन. द नेम ऑफ द बुक इज द राइचुअस लाइफ, सॉरी, है ना. एंड दिस बुक इज कलेक्शन ऑफ द वेरी बेस्ट ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना. तो दिस बुक इज गोइंग टू बी द रिवॉर्ड फॉर दिस वीक्स विनर. इस वीक के विनर का ये रिवॉर्ड होगा. क्लियर? सो कैन वी स्टार्ट नाउ? हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर? Yes, beta, here we are with a new series, most important 1000 GK questions for law entrance examinations, for other law entrance examination, yes, right? And today we'll start with have this 35 questions and every week we are going to have 50 questions every week. So that way around 200 questions. In long run, they are going to be around 1000 questions. Chali, am I clearly audible? We can start now. So this screen is visible to you. This QR code is visible to you. You need to scan this QR code. Yes, beta, they are useful for judiciary too. Yes, very much. They are useful for judiciary too. Current affairs mostly, है ना. एंड जुडिशरी के लिए भी बिल्कुल काम आएंगे. तो हमें क्या करना है जो हम हर बार करते हैं, यू नीड टू हैव, या तो आप मेंटी ऐप यूज कर सकते हैं या कि फिर यू नीड टू स्कैन दिस क्यूआर कोड या कि डायरेक्टली गो टू menti.com, key in this code 37467617, 37467617 कोड की इन कर दीजिए. Moment you are ready, right, I can start, but be very clear, you need to key in your perfect, clear, correct name. बेटा देखो क्लैट के ताल्लुक में भी उसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्लैट में भी देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो यस, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन. जो भी लॉ रिलेटेड एग्जाम्स होती हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, एमएससीटी हो, राइट, अब स्लैट हो सकता है, एआईएलईटी हो सकता है, क्लैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लैट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई सारे होते हैं और हम लोग तो हर वीक के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं उनको ध्यान में रख के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. तो यस, दे आर एनीवे दे आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर क्लैट टू, right? So if you're preparing for any law entrance examination, this is a must for you. You need to be here every week, right?
We take this session every week on Wednesday. Yesterday it was only, so we are taking this session today. Every week at 2 o'clock we are going to be here, and we are going to come up with 50 important questions every week. है ना, हर वीक के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, महीने भर के 200 क्वेश्चन पर इंक्लूड होते हैं, राइट? तो people are ready, then we can start. 90.com पर जाइए, 37467617 into key in, or simply scan this QR code and you can right away start the quiz. Just confirm me if people are ready. I can start with the quiz. PDF will not be provided, Betty. Garvit, the questions are before you, and I'll discuss to some certain extent these questions. So anyway, this complete video will always be there. So PDF, I can't promise to provide PDF for this. Chaliye. So we are starting with today's quiz with this first question. First question is going to be for you. I hope everyone is ready over there. चलिए बेटा. Garvit, Namya Jitinda, should I start? चलिए चलिए. Okay. We are starting with this first question. This is the first question before you. Try answering this. At which of the following place International Yoga Festival 2023 was organized some time back? करीब करीब सभी सभी ऑप्शंस को बराबर सम्मान देते हुए आपने टिक किया है, बट बी वेरी क्लियर, दिस योगा फेस्टिवल दैट वाज ऑर्गेनाइज सम टाइम बैक इन ऋषिकेश. ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश को योग की बर्थ प्लेस कहा जाता है. दिस योग फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज सम टाइम बैक इन ऋषिकेश. इंटरनेशनल योग फेस्टिवल दिस वाज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 1st March to 7th of March. है ना, इन उत्तराखंड ऋषिकेश में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था. ऋषिकेश जो होता है, वहां से योग की शुरुआत हुई थी, है ना. So the answer should have been Rishikesh only. C should have been the correct answer in this case. But it's working well from my side. I don't think so. There is some certain issue is there, Aniket. It's working well here. है ना? चलिए, I'm coming to question number two. This is question number two for you. Is it? बेटा देख, सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं. डोंट वरी, है ना. एक बार रीस्टार्ट कर ले बली, अगर लग रहा हो तो. आई बिलीव इट्स वर्किंग वेल फ्रॉम माय साइड. इट्स गोइंग ग्रेट हियर. Question number two. This is answer this. Which of the following day is celebrated as the World Wildlife Day? World Wildlife Day की जगह किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? Yes, great. चलिए. 3rd March every year is celebrated as the World Wildlife Day. है ना. 1900, sorry, 2014 was the first time when this World Wildlife Day was celebrated. It was on this day in 1973, Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora, है ना, CIT जिसको साइट्स कहा जाता है, that was adopted on this day on 3rd March 1973. इस डे की शुरुआत 2014 में हुई थी. Today is 3rd March. On this day, Wildlife Day is celebrated. The theme for this year was partnership for the wildlife conservation. So 3rd March should have been the correct answer for the question number two. This is question number three before you.
फॉलोइंग एंटिटी इज प्लानिंग टू लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट ऑन कॉइन वेंडिंग मशीन, कॉइन वेंडिंग मशीन पे पायलट प्रोजेक्ट कौन लॉन्च कर रहा है? देखिए हमारे देश में कॉइन्स की जब बात की जाती है तो देर इज रिक्वायरमेंट फॉर वन सच इनिशिएटिव, है ना? तो आरबीआई इज प्रिपेयरिंग टू इनिशिएट अ टेस्ट प्रोग्राम टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, जिसको क्यूसीवीएम कहा जाएगा, है ना? देयर वाज अ स्टडी एंड अकॉर्डिंग टू this particular issue, RBI got to know that there is a requirement for such thing. So RBI is going to go for this pilot project in around 19 different cities, different sites at 12 different cities. 12 cities में 19 sites पर RBI is going to have such vending machine wherein the amount will be debited from your account, है ना? जो यूपीआई के द्वारा भी कह सकता है, वेरी क्यूआर कोड से यू मेक सो पेमेंट एंड द अमाउंट विल डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद दी दिस कॉइन्स, कॉइन जो होंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि इट इज गोइंग टू बी कुछ एक ट्रायल वर्जन, एक ट्रायल प्रोजेक्ट की तरह इसको देखें। तो आरबीआई इज गोइंग टू गो फॉर दिस क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। तो आरबीआई शुड हैव बीन द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 4, Strategic Arms Reduction Treaty Start 1 was signed between US and Russia in which of the following year? किस वर्ष में स्टार्ट ट्रीटी, जिसमें पहला वर्जन पूछा गया? बी वेरी क्लियर, यू नीड टू आंसर द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस ट्रीटी वाज साइंड। पहली बार इस ट्रीटी को कब साइन किया गया था? यस, तो मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली, 6 of you answered correctly. 1991 was the first time when this treaty was signed between US and Russia, है ना? यूएस और रशिया के बीच में ट्रीटी जो है वो 1991 में पहली बार साइन की गई थी। इट वाज 1991। द ट्रीटी लेटर एक्सपायर्ड इन 2000, जिसको बोलना चाहिए 9 में एक्सपायर हुआ, उसके बाद में नई ट्रीटी 2011 2010 में लिखी गई थी, इसको न्यू ट्रीटी कहा जाता है। अब उस न्यू ट्रीटी से अभी कुछ समय पहले पुतिन ने दे हैव बैक्ड ऑफ फ्रॉम द ट्रीटी, मतलब दे आर सेइंग दे आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। They are not going to continue because two reasons they have given. First, it's sanctions they have put in. यूएस ने जो रशिया पर sanctions लगाए हैं उसके कारण पे they can't continue with the treaty. Secondly, they are saying that there are rise in the COVID cases in US. So for these two reasons, we can't continue with this particular treaty. इस treaty में क्या होता था कि इन दोनों ने अपने जो न्यूक्लियर आर्म्स होते हैं, जो अपने आर्सेनल होते हैं, उस पर कैप लगाया हुआ था और सुपरविजन की अथॉरिटी एक दूसरे को देख के रखी हुई थी। बट देन क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर की जब बात करते हैं तो इस वॉर के अंतर्गत यूएस ने सैंक्शंस लगाए रशिया पर, तो उसको रिटेलिएशन माने या उसको जैसा भी माना जाए, दैट ट्रीटी हैज बीन डिसकंटिन्यूड फ्रॉम रशिया एंड नाउ रशिया ने उसको न्यू ट्रीटी जो थी उसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया है। तो टू सच ट्रीटीज आर देयर। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो होती है वो 2010 में आई थी, और जो स्टार्ट ट्रीटी की बात की जाती है, जो बिगनिंग वाली स्टार्ट वन जिसको कहा जाता है, दैट स्टार्ट वन वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1991। तो बी शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर इन दिस केस, है ना? बी हमारा यहाँ पर सी आंसर होना चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड एनजीओ डे किस दिन मनाया जाता है? Yes, 27th Feb is the day when World NGO Day is celebrated. World NGO Day जो है वो 27th फरवरी को मनाया जाता है ना? इट स्टार्टेड इन ईयर 2009, तो 2009 में उसकी बिगनिंग हुई थी, बट बाद में यूनाइटेड नेशंस वगैरह अप्रूवल करते हुए देखें तो ओवरऑल इन 2014 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंटरनेशनल एनजीओ डे मनाया गया। तो बिगनिंग इसकी 2009 में होती है, स्टार्ट किया गया था, but International NGO Day was celebrated for the first time, was observed for the first time, was in year 2014, 2014 में पहली बार इसे मनाया गया था। Day is 27th of Feb, NGO Day. Coming to question number 6. First meeting of W20, that is Women 20 under India's G20 presidency, was held at which of the following place? किस जगह पर पहली W20 मीट जो कराई गई थी? कोई याद हो तो U20 मीटिंग was held under G20 in भोपाल some time back, है ना?
अभी जो W20 मीट दैट इज वुमेन 20 मीट वाज हेल्ड सम टाइम बैक इन छत्रपति संभाजी नगर, है ना। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद, जो नया नाम औरंगाबाद को जो दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर इज द प्लेस वेर इन W20 वुमेन 20 एक ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप जो अंडर G20 होता है, वहाँ मीटिंग इसकी कराई गई थी। बिकॉज इंडिया इज द प्रेसिडेंट फॉर कंप्लीट 1 लॉन्ग ईयर फॉर G20 का प्रेसिडेंट होता है। तो हमारे देश में कई जगह पर जो G20 से रिलेटेड मीटिंग्स कराई जा रही हैं। जैसा मैंने अभी कहा, U20 मीटिंग वाज हेल्ड इन भोपाल सम टाइम बैक, है ना। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट जो है वो भी मार्च में इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, एंड सो मेनी बिग लीडर्स फ्रॉम द वर्ल्ड दे आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग। एंड देन वुमेन 20 मीटिंग की जब बात की जाती है, तो दैट मीटिंग वाज हेल्ड इन संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, जिसका जो पहले औरंगाबाद कहलाता था, है ना। तो अराउंड 150 women dignitaries from various nations they took part in this particular meet. So coming to question number 7 now. The following is recently been appointed as the Vice Chief of Army Staff. Vice Chief of Army Staff किसे बनाया गया है? Great, very good. The Vice Chief of Army Staff is Lieutenant General M.V. Suchindra Kumar. M.V. Suchindra Kumar जो हैं वो बने हैं हमारे नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे हैं, जहां लेफ्टिनेंट जनरल B.S. राजू ने नाम दिया गया, ही वाज अर्लियर, मतलब वो ही इज आउटगोइंग वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, and now General M.V. Lieutenant General M.V. Suchindra Kumar has become the new Vice Chief of the Army Staff. So B should have been the correct answer in this case. Coming to question number 8 here. बेस्ट फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर ईयर 2022 किसको दिया गया है? चलिए, मेसी को इस साल का बेस्ट फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया। राइटली सो, ही वेंट ऑन टू विन वर्ल्ड कप फॉर, मतलब वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय अर्जेंटीना एंड ही वाज द वन ऑफ द contributor. So Messi has been given this year's Men's Footballer of the Year, the best FIFA football awards in Paris. Messi को दिया गया। 35 years old, he has recently retired from the international football. And after 1986 is the second, मतलब 86 के बाद में अब जाकर के with Messi being at the end of the affairs, अर्जेंटीना हैज वॉन द वर्ल्ड कप, है ना। और लियोनेल मेसी को दूसरी दफा, ओनली सेकंड टाइम ही हैज बीन चूजन एज द बेस्ट फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर, केवल दूसरी दफा उनको ये अवार्ड मिला है। इन विमेन्स इट वाज बार्सिलोना सुपरस्टार एलेक्सिया पुटेलस जो थी, एलेक्सिया को दिया गया है विमेन्स सेक्शन में विमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर। एंड लियोनेल मेसी हैज बीन गिवन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर में उनको दिया गया है। गर्वित, फ्रेंकली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू आर आस्किंग ना, मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे क्लियर हो नहीं रहा है। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। क्लैट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, मोर सो फॉर एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन, and but for CLAT also it is very much going to be helpful. You need to be here if you're preparing for CLAT, as simple as that. Yes, Arav, it is going to be useful. 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था? इन दिस स्टेट 14 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ऑर्गेनाइज इन राजस्थान समटाइम बाय बीकानेर, राजस्थान में, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कुछ समय पहले ऑर्गेनाइज किया गया था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हियर ना, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद में विल कम डाउन टू द फर्स्ट लीडर बोर्ड ऑफ द डे। हम लोग दिन के पहले लीडर बोर्ड पर आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 10, ट्राई आंसरिंग दिस करेक्टली। यू आर बीइंग गिवन ओनली 10 सेकंड। आई बिलीव अब तक आपको क्लैरिटी होगी कि आपको केवल 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है ना। यू आर बीइंग गिवन ओनली 10 सेकंड टू आंसर द क्वेश्चन। The moment you look at the question, you should be very clear and you need to go with the answers.
चलिए, the question was Soyuz MS-23 spacecraft belongs to which of the following countries? Soyuz किस particular country को belong करता है? Soyuz was in news some time back because it was launched to rescue बोल सकते हैं इसे, because three this astronauts जो है वो ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, दे आर इन अ वे स्ट्रैंडेड ओवर देयर, वहां पर है और उन्हें वापस लाया जाना है. दे वर अबाउट टू बी कमिंग फ्रॉम अनदर स्पेस क्राफ्ट, बट देन देयर वाज सम कूलेंट इशू विद द अदर कैप्सूल, है ना. तो उस पर्टिकुलर इशू के कारण पे अब ये सोयूज MS-23 हैज बीन साइंड to to get those three stranded astronauts at International Space Station, है ना. सो सोयूज जो है इट वाज लॉन्च बाय रोस्कोसमोस जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी होती है, उनके द्वारा इन तीन स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है. इट वाज लॉन्च बाय रोस्कोसमोस रशिया. तो हियर वी क्लोज विद 10 क्वेश्चन एंड आफ्टर 10 क्वेश्चन दिस इज द स्टेटस, दिस इज द लीडर बोर्ड फॉर टुडे. बट अगर विद फ्रेंकली आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, तो आई कैन कमेंट ऑन दैट. मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है फ्रेंकली, है ना. चलिए, with 8,000 points, Soumya is leading, followed by Garvit with 7,403 points, followed by Smriti, Goat, Pankaj Yadav, Achal, Ishika, Gurudat, Navya, and Tanishka. So these are the top 10 players at this point of time. After 10 questions, this is the status. We're still left with 25 questions. हम लोग 25 क्वेश्चन के साथ में we are in quiz right now. So you come down to question number 11. This is question number 11 for you. Try answering this. Exercise Desert Flag was recently conducted in which of the following country? Desert Flag 8 was the version, और ये किस देश में कुछ समय पहले कंडक्ट किया गया था, हाँ? तो exercise Desert Flag was conducted in UAE some time back. It's not a bilateral exercise wherein two countries are there. India did participate in this exercise. इसमें पहली बार तेजस जो है उस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा होता है उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था फर्स्ट टाइम. एंड it was a multilateral exercise, so wherein UAE, France, Kuwait, Australia, UK, Bahrain, Morocco, Spain, Korea, and USA, all these countries participated in the exercise. And this exercise is still going on. It was 17 Feb से लेकर के 17 March, a month long exercise. This is, and it is being organized in UAE में से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. डेजर्ट फ्लैग 8 वर्जन होता है. तो इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस. UAE should be the correct answer. Many of you answered it correctly. Coming over to question number 12. Did I last 1 week from 26 to 4th of March? देखिए, तोशखाना केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो इट वाज ऑब्वियसली इट वाज इन न्यूज. विच कंट्री? पाकिस्तान. व्हाई न्यूज? बिकॉज द पाकिस्तान फॉर्मर पीएम, पाकिस्तान के जो पुराने फॉर्मर पीएम होते हैं, इमरान खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, है ना, ही वाज इन्वॉल्व इन दिस केस. तोशाखाना वहां पर एक डिपार्टमेंट होता है. इस डिपार्टमेंट में जो भी लीडर्स होते हैं, वो जो भी उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, उस गिफ्ट्स को इनका डिटेल प्रोवाइड करना होता है इस डिपार्टमेंट को, इन सबमिट करना होता है. बट when Imran Khan was PM, he did get lot many gifts, but he did not submit the details to department. And for that reason a case has been filed against him, है ना. और उस पर्टिकुलर केस मतलब एक करप्शन केस जैसा उसको माना जाए, उस पर्टिकुलर केस में देयर वाज अ नॉन बेलेबल वारंट व्हिच वाज रिलीज्ड, व्हिच वाज देयर अगेंस्ट इमरान खान. तो तोशाखाना केस हुआ था. इट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान. इमरान खान से रिलेटेड केस है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. Recently, fifth new layer, that the innermost layer of the core of the Earth, was confirmed by researchers. Which of the following two metals, minerals, this layer is made of? देखिए, अभी तक हमें यही मालूम है कि अर्थ की चार लेयर होती है ना. चार लेयर कौन सी मानते हैं द क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर आर द फोर लेयर्स ऑफ द अर्थ.
बट अभी रिसर्चर्स ने कुछ समय पहले ये पता किया है, मतलब दे फाउंड, दे गॉट दिस इंफॉर्मेशन या दे रिसर्च ऑन दिस, दैट देयर इज अनदर फिफ्थ लेयर, एक पांचवी लेयर भी होती है, दैट फिफ्थ लेयर इज मेड ऑफ आयरन एंड निकल। आयरन निकल ये दो जो मेटल होते हैं, इनके द्वारा दिस फिफ्थ लेयर इज ऑल्सो देयर। ये पांचवी लेयर जो है, इसके बारे में कुछ समय पहले पता पड़ा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। Northern Ireland Protocol was signed in which of the following year? देखिए, अभी कुछ समय पहले दिस पर्टिकुलर विंडसर फ्रेमवर्क वाज इन न्यूज, है ना। विंडसर फ्रेमवर्क जो है वो न्यूज में है। और अगर विंडसर फ्रेमवर्क के बारे में हमें नहीं मालूम है, आपने अगर नहीं पढ़ा है, तो मनु सर का लेक्चर अली अपने यूट्यूब चैनल पर है। यहाँ पर वो लेक्चर आप देख लीजिए। ही हैज क्लियरली प्रॉपरली एक्सप्लेन द विंडसर फ्रेमवर्क इशू। और इस विंडसर फ्रेमवर्क इशू से रिलेटेड ही नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, इनफैक्ट नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को रिप्लेस करके दिस विंडसर फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क इज गोइंग टू ऑपरेट। अब ये जो प्रोटोकॉल है दैट वाज साइंड इन ईयर 2019, जो पर्टिकुलर इशू आप देखें तो नॉर्दर्न आयरलैंड इज गोइंग टू बी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज गोइंग टू पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके का हिस्सा होता है। तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस, देयर वाज इशू इज दिस। तो उस इशू को अभी आगे बढ़ा, मतलब उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए दिस विंडसर फ्रेमवर्क बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड UK has been signed, but this has replaced the Northern Ireland Protocol. And this Northern Ireland Protocol was there in 2019, उसे 2019 में साइन किया गया था। तो B 2019 should have been the correct answer, but the issue is this Windsor framework, और उसे आप मनुष्य के लेक्चर में समझ सकते हैं। Coming to question number 15, this is question number 15 for you. जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? Zero discrimination day is observed on 1st of March every year. It's an annual observance. 1st of March को zero discrimination day मनाया जाता है. It was first time observed in year 2014. 2014 में पहली बार मनाया गया। तो this year's theme was save lives and decriminalize. Now, this save lives, decriminalize is the theme for this year. The day is intended to promote the equality before law and practice throughout the member countries of United Nations. The day should be 1st March. A should have been the correct answer. Coming to question number 16 here. कई लोगों ने यहाँ पर राम मंदिर आंसर किया है, but the correct answer is Shri Jagannath Temple, and this issue came into picture because Archaeological Survey of India ने एक जगह they stumbled upon a 1300-year-old stupa, और वो जो पाया गया, स्तूप जो पाया गया, दैट वाज ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, जो वहां पर माइनिंग साइट जो होती है, वो माइनिंग साइट पर ये पाया गया। एंड दिस माइनिंग साइट जो है, वहां पर जो खोंडालाइट स्टोन्स होते हैं, उसकी माइनिंग की जा रही थी फॉर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल, जो पुरी में जो टेम्पल होता है, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा था। तो देन दिस माइनिंग साइट पर जो एक्सरसाइज हुई थी, उससे रोक दिया गया है, बिकॉज दिस स्तूप वाज फाउंड ओवर देयर, and the जो mining की जा रही, that was of chondrite stones. So that was this complete issue of the issue came into picture. So तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो जगन्नाथ टेम्पल should have been the correct answer in this case. बेटा, these questions are normally taken from various newspaper, जो न्यूज होती है वहां से ही नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो लिए जाते हैं। ऑल द इवेंट्स फॉर पर्टिकुलर वीक, जैसे आई टोल्ड यू कि दिस क्विज जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट वाज फ्रॉम 26, 27, 28 एंड 1 2 3 4, मतलब 7 दिन, 4 मार्च तक। तो इस 7 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज इन टर्म्स ऑफ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस इन वेरियस न्यूज़पेपर जो होती हैं, mostly these questions are taken from those discriminatory newspapers only.
So if you are reading newspaper, if you are making notes, if you are going through various content, so you will be able to answer such quizzes. है ना, बिल्कुल इनको आंसर कर पाएंगे. तो प्रिपरेशन के लिए तो आप अखबार पढ़ें एंड टॉप रैंकर्स वेबसाइट पे हमारा क्विज एक होता है, आप क्विज देखें तो यू आर गोइंग टू हेल्प, मतलब इट विल बी ग्रेट हेल्प टू यू इन दिस. ओके, coming to question number 17, answer this question 17 for you. A temple in which of the following state became the first in the country to use mechanical life-like elephant for the temple rituals. मतलब एक जो मैकेनिकल एलिफेंट जो है वो पूजा के लिए वहां पर जो रिचुअल्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज बीइंग डन? या द आंसर इज केरला. केरला में दिस टेम्पल श्री कृष्ण टेम्पल जो होता है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में होता है. एंड देयर एट दैट प्लेस दिस मैकेनिकल लाइफ लाइक एलिफेंट, मतलब इट्स लाइक वर्चुअल, वर्चुअल तो नहीं बोलना चाहिए, इट्स लाइक अ रोबोटिक एलिफेंट आप बोल सकते हैं. तो दैट रोबोटिक एलिफेंट इज बीइंग यूज्ड फॉर वेरियस टेम्पल रिचुअल. जो रिचुअल्स होते हैं उसके ताल्लुक में दिस एलिफेंट इज बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एनी सच टेम्पल इन इंडिया. दिस प्रैक्टिस इज बीइंग यूज्ड, है ना. तो वहां पर इस पर्टिकुलर दिस रामन मैग्निफिसेंट लाइफ लाइक मैकेनिकल रोबोटिक एलिफेंट इज बीइंग यूज्ड इन केरला. केरला में इसे यूज किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 फॉर यू. National Science Day started in which of the following place? Following year, sorry. देखिए, नेशनल साइंस डे पहले तो इट इज ऑब्जर्व ऑन Feb 28 एवरी ईयर ना. 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है. आपको पूछा गया था किस वर्ष यह दिन की शुरुआत होती, किस वर्ष से यह दिन मनाया जा रहा है ना. तो पहले देखिए यहाँ पर जो चार वर्ष दिए गए 1928, 1930, 1986 एंड 1987. ऑल दीज 4 years are important. 1928, 28 February was the day on this day रमन इफेक्ट सीवी रमन द्वारा जाना गया था. मतलब ये इफेक्ट उस दिन उन्होंने डिस्कवरी की थी, रमन इफेक्ट की. तो दिस 1928 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ईयर 20th फरवरी को ये इफेक्ट जो है वो ही डिस्कवर्ड इट. 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज पर्टिकुलर रमन इफेक्ट के लिए दिया गया. तो 1930 ईयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. 1986 था वो ईयर था जहां पर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा गवर्नमेंट को ये अनुमोदन दिया गया था. मतलब इट वाज रिकमेंडेड to ask the government of India to designate February 28 as the National Science Day. और 1987 में पहली बार इसे मनाया गया था. तो year 1987 is the year when first time this day was celebrated. 28 में डिस्कवरी होती है, 30 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है, 86 में उसका अनुमोदन होता है, मतलब बोला जाता है, 87 में पहली बार मनाया जाता है. In 1954 was the year when this he was given Bharat Ratna. Dr. C.V. Raman was given Bharat Ratna in year 1954. 1930 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था. है क्लियर? सो डे जो इसमें अगर देखें तो 28 फरवरी है और कब शुरुआत हुई तो 87 में शुरुआत हुई थी. दिस ईयर द थीम वाज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग वाज द थीम फॉर दिस ईयर. यस गवित, मस्ट यू मस्ट हैव रेड इट इन एनसीईआरटी. श्योर, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने. क्वेश्चन नंबर 19 बिफोर यू. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. So the following campaign was launched by President recently as a part of efforts to turn conservation of water into mass campaign. Catch the Rain campaign जो है at the beginning of rainy season, the Catch the Rain campaign was launched by our President Draupadi Murmu. She launched Catch the Rain campaign 2023 on March 4, 2023 as part of effort to turn the conservation of water into a mass campaign. मतलब water conservation is a big requirement for our nation. वो अपने आप में एक mass movement बने, इस ताल्लुक में इस campaign को launch किया गया था. The theme of the campaign was source sustainability for the drinking water. है ना. तो हमारा आंसर जो होना चाहिए बी शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. कैच द रन शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. ट्रायल्स इन दिस क्वेश्चन.
University from which of the following country became the first to receive the approval to set an international branch in Gift City? Gift City गुजरात में इंटरनेशनल ब्रांच ओपन करने के लिए किस कंट्री की यूनिवर्सिटी को पहली बार अप्रूवल दिया गया है? Okay, so here in Australia's university एक होती है. This name of the university is Deakin University from Australia. It became the first foreign university to receive approval in the international branch campus of Gift City. Gift City गुजरात में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी को ये अप्रूवल जो है वो दिया गया. तो इट्स यूनिवर्सिटी फ्रॉम गुजरात, सॉरी यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, है ना, गुजरात में ये सेटअप करने वाले हैं. तो आफ्टर 20 क्वेश्चन दिस इज द लीडर बोर्ड एंड होपफुली Soumya is still leading with 13,348 points, followed by Garvit, Smriti, Achal, Pankaj, Tanishka. यस बेटा, जो भी नाम आपने यहाँ पर अगर गोट दिया है ना, तो एग्जैक्ट नेम आपका जो हो बता दीजिएगा, तो आई इंक्लूड दैट हियर. महक, नव्या एंड प्रांजल. तो दीज आर द टॉप 10 contenders at this point of time. We are left with 15 question. This is question number 21 for you. Try answering this question. Who in the following has been awarded Player of the Year by the Asian Chess Federation? यस, देखिए डी गुकेश जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया से, ये सारे नाम जो आपको दिए गए, देर ऑल ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया. डी गुकेश वेंट ऑन टू विन गोल्ड मेडल इन 44 चेस ओलंपियाड जो महाबलीपुरम में भारत में हुआ था लास्ट ईयर. उसमें ही वेंट ऑन टू विन गोल्ड इन दैट. तो फॉर दैट रिगार्ड एशियन चेस फेडरेशन ने डी गुकेश, इंडियन ग्रैंड मास्टर जो है, उनको प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा. ही हैज बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड by Asian Chess Federation. So A should have been the correct answer. D Kuke should have been the correct answer. Tali constituency in which of the following state got road connectivity for the first time since independence recently? आजादी के पहली बार रोड कनेक्टिविटी से जुड़ने वाला ये जो ताली कॉन्स्टिट्यूंसी है, किस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, है ना. अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जो है, उनके द्वारा कुमे ब्रिज जो होता है, वो ब्रिज अभी कुछ समय पहले इट वाज लॉन्च्ड एंड इट विल दिस ब्रिज इज गोइंग टू कनेक्ट यांगते इन अरुणाचल टू ताली. It's a new road going towards Tali, providing all the season connectivity to remote constituency after 76 years of the independence. तो आजादी के 76 वर्ष बाद इस पर्टिकुलर जगह को रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23. The following player has been banned by NADA for 4 years. When you answer this question, you need to be very clear. You know the answer of the question. Don't confuse yourself when you'll be answering. I told you before and I told you when you answer this question, you not to confuse yourself. देखिए दीपा कर्माकर जो हमारी जिम्नास्ट हैं भारत से, उन्हें 21 महीनों का बैन लगाया गया है ना, 21 महीनों का. हियर इन वी आर टॉकिंग अबाउट 4 years बैन. तो ये 4 साल का जो बैन है वो ऐश्वर्या बाबू. तो शी इज अ ट्रिपल जंपर फ्रॉम इंडिया एंड शी हैज बीन बैंड फॉर 4 year बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. नाडा ने 4 वर्षों का डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उन पर बैन लगाया है, राइट. अब वो जब हम दीपा कर्माकर की बात करते हैं, तो दैट हैज बीन रिट्रोस्पेक्टिव बैन जो कि 21 महीनों का होता है. सो दैट इज अ डिफरेंट केस, वो अपने आप में अलग केस है. यहाँ पर हमें ऐश्वर्या बाबू शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर बिकॉज शी हैज बीन बैंड फॉर 4 years बाय नाडा. उनको 4 वर्षों का बैन लगाया गया बिकॉज शी टोल्ड कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम सम एलिमेंट, और वो उस ताल्लुक में दवाई के दवाई लेने के दौरान दिस पर्टिकुलर जो पाया गया. बाकी दीपा कर्माकर वाले केस में देखा जाए तो उनको रेट्रोस्पेक्टिव मतलब 2021 से वो बैन जो है एप्लीकेबल होता है. तो दैट वे अगर देखा जाए तो इट इज 21 मंथ्स बैन विल क्लोज इन मंथ ऑफ जुलाई में खत्म हो जाएगा. ईयर इन 4 वर्षों के बैन की बात की गई. तो ऐश्वर्या बाबू इंडिया टॉप ट्रिपल जंपर शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24.
The following national party is not among the top three parties in declared income in 2021-22 2021-22 में जो डिक्लेयर्ड इनकम की बात की जाए तो जो हमारी नेशनल पार्टीज होती है उनमें से कौन सी नेशनल पार्टी टॉप थ्री में नहीं है, इज नॉट पार्ट ऑफ टॉप थ्री। देखिए बीजेपी इज एनीवे देयर, बीजेपी इज देयर। सेकंड जो होता है वो टीएमसी है, टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस जो है उनका जो अर्निंग है दैट इज सरपास आईएनसी, उनकी अर्निंग आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी ज्यादा है। बट एनसीपी इज नॉट अमंग फाइव, सीपीआईएम जो है वो चौथे स्थान पर है। राइट, तो एनसीपी इज नॉट अमंग द फाइव, एनसीपी अपने आप में इन टॉप फाइव में नहीं है। तो फर्स्ट में बीजेपी आता है, देन टीएमसी आता है, देन आईएनसी आता है, उसके बाद में सीपीआईएम आता है। तो एनसीपी इज नॉट पार्ट ऑफ टॉप थ्री नेशनल पार्टीज इन टर्म्स ऑफ अर्निंग फॉर ईयर 2021-22। Here we come down to question number 25. This is question number 25 for you. Shinyometry is an exercise which was conducted between India and which of the following country recently? ये जापान और भारत के बीच में कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। इसमें धर्मा गार्जियन अगर आपको याद हो तो धर्मा गार्जियन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। देन देयर इज सयो काइजिन दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड के बीच होती है, दैट इज जिमेक जो मैरिटाइम नेवल एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान के बीच में। शिन्योमेट्री एक्सरसाइज जो है दैट इज एयर डिफेंस, मतलब उसमें इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर डिफेंस फोर्स जो होती है ये दोनों शुमार होते हैं। तो शिन्योमेट्री इज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान अलोंग विद अदर एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन जिमैक सहयोग ये अदर एक्सरसाइज होती हैं जो कि इंडिया और जापान के बीच में होती हैं। तो ये अपने आप में एयर फोर्स के जो इंडियन एयर फोर्स एंड जापानीज एयर फोर्स होती है उनके बीच कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइज है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26 नाउ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 फॉर यू। Prime Minister of the following country was the chief guest of Raisina Dialogue 2023? देखिए इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो जॉर्जिया मेलोनी है, शी केम टू इंडिया सम टाइम बैक, है ना, एंड शी केम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, शी वाज चीफ गेस्ट ऑफ 3 डे डायलॉग, राइसन डायलॉग जो होता है उसमें उन्होंने शिरकत की थी, शी पार्टिसिपेटेड इन दैट। द थीम ऑफ द डायलॉग वाज प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, द लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। So this was a theme and Italian PM came as a chief guest to participate in this particular Raisina dialogue. Coming to question number 27. US claims that coronavirus came from Wuhan, है ना? But China claims that it came from US and it came from particular place from US. You need to confirm the name of the place. Which of the following places from where this, as per China, this virus came, coronavirus came. तो coronavirus came from Maryland as per US, है ना? अगर as per China, चाइना यूएस पर ये सॉरी यूएस चाइना पर ये ब्लेम लगाता है कि आपके यहाँ से वुहान वायरस उसको बोलते हैं, चाइना जो कोरोना वायरस है वुहान से आया, वो एक लैब से आया। तो उसके अगेंस्ट में चाइना से इट केम फ्रॉम यू ओनली, यूएस मिलिट्री द्वारा उसको एक तरीके से रिलीज किया गया। तो वहां की रिसर्च लैब जो होती है जो मैरीलैंड में होती है, वहां से दिस पर्टिकुलर जिसको बोलना चाहिए वायरस, कोरोना वायरस जो है वो आता है। राइट, तो एक दूसरे पर एलिगेशन का सिलसिला इनका चल रहा है। और अगर मोन्टाना कई लोगों ने आंसर किया तो मोन्टाना इज द प्लेस जहां पर चाइना के वो जो बलून था उसे गिराया गया था बाई यूएस। तो मोन्टाना वाज इन न्यूज, बट मोन्टाना वाज इन न्यूज फॉर यूएस चाइना इशू ओनली, बट दैट वाज वो बलून वाला जो इशू होता है उस ताल्लुक में इट वाज मोन्टाना। यहाँ पर हम मैरीलैंड की बात कर रहे हैं। As per China, US military research lab in Maryland was the place wherein coronavirus was originated. Coronavirus जहां से originate हुआ था। तो answer should have been Maryland. A should have been the correct answer. Coming down to question number 28. Answer this. Which state passed a bill that provides up to 10 years of prison to curb paper leaks in government recruitment examination? देखिए दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, आई बिलीव गुजरात इसका सही आंसर होता है। टफ क्वेश्चन इन द सेंस कि दिस पेपर लीक थिंग इज लाइक
इट इज ओमनी प्रेजेंट टू एवरी स्टेट। तो इसमें आप कोई जज नहीं कर सकते, आप सोच के उन्हें कंफर्म कर सकते कि क्या आंसर होगा। द करेंट आंसर वॉज गुजरात। तो गुजरात में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है फॉर एनी वे, फॉर एनी पर्सन इन्वॉल्व इन मेल प्रैक्टिसेस ऑफ पेपर लीक। उसमें अगर इफ यू आर सपोर्टिंग, इफ यू आर सम वे इन्वॉल्व, तो देयर प्रोविजन हैज बीन देयर फॉर एवरी सच कंडक्ट। So according to Bill's term, offender would be responsible paying a fine that can be less than 10 lakh or greater than 1 lakh rupees. Cannot be less than and greater than 1 crore. मतलब 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का फाइन भरना पड़ सकता है, 10 साल तक की सजा हो सकती है, अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं, या यू आर हेल्पिंग एन एग्जामिनी टू चीट। एवरी पर्टिकुलर ऑफेंस या कंडक्ट दैट इज टेकन केयर ऑफ इन दिस पर्टिकुलर बिल, है ना। तो इट वाज approved by Gujarat government, Gujarat Assembly द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। Coming to question number 29. This is question number 29 for you. Which committee has been formed by Supreme Court to investigate allegations against the Adani Group? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले जस्टिस सप्रे जो होते हैं, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, फॉर्मर एस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में one committee has been set up. This committee is going to investigate the regulatory failure regarding the Adani Group वाला जो issue भी हुआ है, where investors have lost crores and crores of rupees जो उनके द्वारा खोए गए हैं, उस ताल्लुक में this particular committee has been set up, and this committee will comprise other prominent members like former SBI chairman OP Bhatt, retired judge J.P. Devdar, Infosys co-founder Nandan Nilekani, banking veteran KV Kamath, and Mumbai advocate Someshwar Sundaresan. So these many people are going to be part of the committee, and the committee will be headed by former Supreme Court Justice Abhay Manohar Sapre. So यहाँ पर A should have been the correct answer in this case. Coming to question number 30, last question before the third leaderboard. This is question number 30 for you. Most BD workers belong to smokers, sorry, not workers we're talking about. Most BD smokers belongs to which of the following state? अब यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार people in मतलब जो तंबाकू का सेवन करने के ताल्लुक में, it can be chewing, it can be smoking, it can be cigarette smoking, can be बीड़ी smoking, उस ताल्लुक में रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में the most BD smokers belong to यहाँ पर आपको जो आंसर दिया गया it should be West Bengal should be the correct answer। यहाँ पर सिगरेट स्मोकर के ताल्लुक में देखा जाए तो it should be मिजोरम, जहां पर 62.4% ऑफ स्मोक ऑफ पीपल और मेल जो स्मोकर्स होते हैं, they smoke cigarette, and then it was West Bengal wherein 24.3 smoke BD, the highest share in India। तो वेस्ट बंगाल इन टर्म्स ऑफ बीडी, अगर सिगरेट की बात की जाए तो it is मिजोरम। And there have been various details which are given regarding the chewable form of the तंबाकू का सेवन जो किया जाता है उसमें and all। तो various details have been given। इसमें बीडी के ताल्लुक बोला जाए तो it is वेस्ट बंगाल वेर इन मोस्ट नंबर ऑफ जिसको होना चाहिए सबसे ज्यादा शेयर होता है बीडी स्मोकर्स का ओवरऑल इंडिया ताल्लुक में देखें तो। So after 30 questions, this is the leaderboard. We will be left with only 5 questions after this. Those important 5 questions can really make a change. Soumya is still leading with 17,000 points, followed by Garvit with 16,000 points, followed by Achal, Smriti, Pankaj, Tanisha, Mac, Navya, Nishi, and last is Gord. So these are the top 10 contenders at this point of time. We are left with last 5 questions. The way the scores are very, very close to each other. These 5 questions are really very important. Try answering these 5 questions, and these 5 questions आपको सही आंसर करना है और आपको जल्दी आंसर करना है, जल्दबाजी के बिना आंसर करना है। तो वी आर कमिंग डाउन टू लास्ट 5 क्वेश्चन, द फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन बिफोर यू, ट्राई आंसरिंग दिस। अगर आप मेंटी पे जाकर के इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, यू नीड टू गो टू menti.com and you need to key in this code। I'm giving this code, only 4 questions are left after this, but still 37467617 is the code. Go to menti.com and still you can participate. Okay, so question was 31st question was which bank has recently completed first non-dollar transaction with Sri Lanka
बाय पेइंग एक्सपोर्ट्स इन श्रीलंका रुपीज, श्रीलंकन रुपीज में हमने ट्रांसफर करके, मतलब नॉर्मली दो देशों के बीच में जो बिजनेस होता है दैट इज डन थ्रू डॉलर्स, है ना, डॉलर्स के, बिकॉज डॉलर इज एक्सेप्टेबल करेंसी एवरीवेयर, राइट। पहली बार द नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन जो है वो एसबीआई द्वारा किया गया, एंड एसबीआई मतलब थ्रू दिस नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन एसबीआई इज पेड इन श्रीलंकन रुपीज, मतलब श्रीलंका से एक्सपोर्ट किया गया और उसके ताल्लुक में श्रीलंकन रुपीज में पेमेंट जो है वो किया गया। तो एसबीआई has become the first such bank to get involved in this transaction. So Indian lender SBI completed first non-dollar transaction with Sri Lanka by paying in exports, paying for exports, मतलब we are importing and they are exporting and we are making payment in Sri Lankan rupees to Sri Lanka, है ना। तो ये पहली बार एसबीआई द्वारा पहला ऐसा ट्रांजेक्शन जो है वो किया गया है, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32 फॉर यू। Jai Jakalu became the first woman to be elected in which of the following assembly, है ना। तो यहाँ पर नागालैंड असेंबली में पहली बार she became the first woman MLA to be selected in the to be selected in the नागालैंड असेंबली। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी कैंडिडेट होती है, और दिमापुर थर्ड जो होता है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से जीत करके आई है। अब शी इज एजुकेटेड पर्सन, शी इज यूएस एजुकेटेड लॉयर हु इज हाईली रिगार्डेड सोशल एंटरप्रेन्योर, and she even founded YouthNet, a non-profit entity aimed at helping the youth acquire education and develop skills. So she is somebody who went on to become the first woman this MLA of Nagaland. So A should have, sorry, C should have been our correct answer in this case. Coming to question number 33. Per Supreme Court's order, CEC Chief Election Commissioner, election commissioners will be appointed by a committee, है ना? And this committee will be comprising of people, three persons. Who among the following is not one among them, है ना? तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले बोला है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट में हमेशा इश्यूज होते हैं, कंट्रोवर्सी होती है। दीज अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, इनके कंडक्ट जो होता है इलेक्शन कमीशन का, उसका हमेशा विरोध किया जाता है बाय ऑपोजिशन। तो सुप्रीम कोर्ट इज टोल्ड कि इट इज नाउ ऑनवर्ड्स दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी अपॉइंटेड बाय कमिटी। दिस कमिटी विल कंप्राइज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब पीएम, सीजीआई एंड एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ लोकसभा जो होंगे वह इस कमेटी के मेंबर होंगे, राइट। एंड दीज थ्री ओनली आर गोइंग टू बी द मेंबर्स। अब कौन नहीं होगा तो वो आपसे पूछा गया था। तो इन दैट रिगार्ड लोकसभा स्पीकर इज नॉट गोइंग पार्ट ऑफ द कमेटी। द फर्स्ट थ्री ए बी सी, सीजीआई, पीएम एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी। तो डी शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। नाउ वी कम डाउन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस सेकंड लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू आंसर दिस 34th क्वेश्चन। At which of the following stadiums Sachin Tendulkar's statue is going to be installed in some time? है ना, कौन से स्टेडियम में सचिन का स्टेचू जो है वो इंस्टॉल होने वाला है? क्यों इंस्टॉल होने वाला है? चलिए ग्रेट। वानखेड़े स्टेडियम में इसलिए इंस्टॉल होने वाला है बिकॉज वानखेड़े स्टेडियम वाज द स्टेडियम इन विच सचिन प्लेड हिज लास्ट मैच। सचिन का अपना जो लास्ट मैच था वो वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, है ना, ऐतिहासिक स्थल है, और वहां पर जो सचिन की प्रतिमा होगी वो स्थापित की जाएगी। देखिए, स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम में प्रतिमाएं जो है हमारे प्लेयर्स की वो कम ही स्थापित हुई है। कर्नल सीके नायडू जो थे, जो हमारे देश के पहले टेस्ट कैप्टन थे, उनकी प्रतिमा देश में 3 स्थानों पर स्थापित की गई है। एक तो इंदौर जहां से ताल्लुक रखते थे, दूसरा आंध्र प्रदेश, एंड तीसरा इट्स विदर्भ क्रिकेट ग्राउंड। कर्नल सीके नायडू स्टेचू इज देयर। Now Sachin Tendulkar's statue is going to be there in Wankhede Stadium because that was the place where he played his last match, है ना। और अगर इंटरनेशनल उस पर देखा जाए तो शेन वॉर्न की प्रतिमा जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी जो कहा जाता है वहां पर स्थापित की गई थी। तो दिस
अभी स्थापित की नहीं गई है, अभी अनाउंस किया गया, इन टाइम टू कम इट इज गोइंग टू बी देयर. सचिन, वी ऑल नो ही हैज प्लेड 463 one-day matches, 200 test matches, only one T20 he has played, and he has gone for 100 hundreds. मतलब 100 शतक सचिन द्वारा लगाए गए हैं, and he has made phenomenal 34,000 runs he has made in international cricket. So with this, we come down to the last question of the day. This is question number 35. And with this question, we'll come to the end of the quiz and we'll get the winner of the quiz. So this is third question number 35. Answering this question. Which country leads the group of nations that has approached ICJ for seeking advisory opinion on the climate change? Ajay, I'm talking, I'll speak on that, don't worry. अब देखिए, वनातू एक देश है, एंड दिस देश, ये जो कंट्री है, ये अपने आप में एक आइलैंड नेशन है ना. और जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जब लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा उन देशों को भुगतना पड़ेगा जो कि आइलैंड नेशंस हैं, जो स्मॉल आइलैंड नेशंस है, या कि वो सिटीज जो कि कॉन्टिनेंट्स के जो सी कोस्ट पर होने वाली सिटीज जो होती हैं. क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग से जो समुद्र की जो जो लेवल बढ़ने वाला है ना, सी लेवल जो बढ़ेगा, सी लेवल से सबमर्ज जो कई सारे सिटीज होंगे या देश होंगे, तो उनमें सच कंट्रीज आर गोइंग टू बी एट द रिसीविंग एंड. तो ऐसे अराउंड अ ग्रुप ऑफ 16 नेशंस हैव लॉन्च्ड अ गैलेंट एफर्ट टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना. और उन्होंने, दे मेड अ ग्रुप एंड दे अप्रोच, दे आर टेकिंग द एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम आईसीजे. जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, उनसे वो एडवाइजरी ओपिनियन ले रहे हैं. और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, वो दो तरीके से जुडिस्डिक्शन दे सकता है, एक तो कंटेंशियस और एक होते हैं एडवाइजरी. तो एडवाइजरी ताल्लुक में दे अप्रोच दी आईसीजे, द ग्रुप ऑफ 16 नेशन इन द लीडरशिप ऑफ वनातु, जो एक आइलैंड कंट्री है साउथ पैसिफिक ओशन में, उनके द्वारा अप्रोच किया जा रहा है. इस समय इनका अप्रोच क्यों किया जा रहा है कि भाई, जितने इंडस्ट्रियलाइज नेशंस होते हैं जो कि इस पूरे की पूरे क्लाइमेट चेंज के ताल्लुक में इन्वॉल्व हैं, वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैलेमिटी वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस इन टाइम टू कम, इज फेसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. कर तो ये लोग रहे हैं, बट जो भुगतना पड़ेगा वो आइलैंड कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा. तो दिस मराठू द नेशन जो है, अपने आप में, दे हैव टेकन द लीड and they are approaching ICJ and they are taking the advisory opinion from ICJ regarding this issue of climate change. So the correct answer in this case should have been the A. A should have been the correct answer. With this, we come down to the end of the quiz, and this is going to be the final leaderboard of the day. Okay, so great. Quiz has been won by with 20,000 points, 20,131 points. The quiz is won by Garvit Kaushik. Garvit, many congrats. So proud of you. And this is the first quiz, मतलब जो हमारा 1000 GK question series के जो पहला quiz है, that has been won by Garvit Kaushik. Garvit, you'll be given this book, The Very Best of APJ Abdul Kalam, The Righteous Life. एपीजे अब्दुल कलाम की किताब आपको गिफ्ट में दी जाएगी, दिस प्राइज में दी जाएगी. आई एम गिविंग यू द नंबर, यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल्स, यू नीड टू प्रोवाइड योर contact details, address, and name on this number. You need to note this down. 8085356944 is the number wherein Garvit you need to give in your number, your contact number, and the address. Right. Garvit was followed by Soumya, Achal, Smriti, Pankaj, Tanishka, Pranjal, Navya, Mahek, and Nishi. So many congrats to every one of you sitting there, every one of you who participated in the quiz. This series is going to be every week on Wednesday. Wednesday को हर week this series is going to be there. अब यहाँ पे मतलब ये जो अचल आप पूछ रहे हैं, क्विजडम बेटा, क्विजडम जो हम लोग लेते थे उसी का एक तरीके से एक्सटेंशन माने. यहाँ पर विल बी टारगेटिंग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू टेक 50 क्वेश्चंस, एंड ओवरऑल मंथ का देखा जाए तो 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लोग एक मंथ के डिस्कस करेंगे, मतलब इन वीकली क्विज के ताल्लुक में. और ये हर वीक के, जैसे कि अभी तक हमने डिस्कशन जो किया है वो 4 मार्च तक का डिस्कशन वी हैव टेकन केयर ऑफ. तो अब जो होगा वो 5 से लेकर 11 मार्च के बीच की जो इवेंट होगी, जो भी अखबार में आप पढ़ते हैं, जो रिसोर्सेस आप देखते हैं, उनसे जो आप भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, that knowledge is going to be used, can be tested every week at 2 o'clock Wednesday every week. And again, I repeat, we every winner is provided with a very beautiful good book every week. है ना?
So with this, we end this today's quiz. We are going to meet next week again on Wednesday, 2 o'clock with this series, 1000 important GK question series. And it is bound to make a lot of difference. These questions are going to be very helpful in your law entrance examination. Okay. So congrats to Garvit and all the other contenders. We'll meet next week. Thank you very much for being here. Thanks a lot. Bye.